गुड आफ्टरनून ऑल। यूट्यूब लाइव सेशन में हमारा आज का टॉपिक है ल्यूपिन मे लुक टू सेपरेट द एपीआई बिजनेस। अब इसके लिए सबसे पहले तो समझते हैं एपीआई बिजनेस एग्जैक्टली क्या होता है। फार्मा इंडस्ट्री में एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। मतलब एपीआई एक तरह से वो रॉ मटेरियल है दैट गोज इनटू द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मुलेशंस, फाइनल मेडिसिन जो आप कोई भी फार्मेसी से खरीदते हैं। हालांकि एपीआई सिर्फ रॉ मटेरियल होने से थोड़ा अलग है। एपीआई एक तरह से बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट है जो टैबलेट या कैप्सूल में यूज़ किया जाता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट मेडिसिन में यूज़ होता है वो है एक्सिपिएंट। द एक्सिपिएंट इज केमिकली इनएक्टिव एंड डिलीवर्स द इफेक्ट ऑफ द एपीआई. The amount of API included in a medicine shows the potency of the drug as represented in mg. As the name suggests, the APIs are intermediates made from chemical raw materials. So, APIs have to go through a manufacturing process before they can be used in the manufacture of the final medicines. Now, Lupin plans to hive off its API business. API business को एक separate unit में बांटना कोई नई बात नहीं है। ग्लेनमार्क ने भी ऐसा ही किया था। अपने एपीआई बिजनेस को अलग करके उसे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस नाम दिया था और उसे मार्केट में लिस्ट भी किया था। और ग्लेनमार्क के एपीआई यूनिट ने पिछले 3 महीनों में अच्छे रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं। अब बात आती है कि हालांकि ल्यूपिन ने अभी तक एपीआई बिजनेस के अलग होने का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आने वाले क्वार्टर्स में एपीआई बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। While announcing the Q4 FY23 results, the Lupin management had highlighted that their API business had grown by 14.6% on sequential basis. ये growth domestic और US market दोनों से आई है। Large pharma companies are increasingly trying to focus on their core formulation business and outsource API procurement. That is likely to be the next big opportunity for the API business. What had gone wrong with the API business? पिछले कुछ सालों से API business बहुत प्रेशर में रहा है और इसके कई कारण हैं। Even prior to the pandemic, the US markets were organizing on the buy side and that put a lot of margin pressure on the API business, with most API companies reporting lower price realizations. Then the pandemic came in late 2019 and from that point the post-COVID destocking led to the weak demand for APIs. Then came the supply chain problem since most of the API manufacturers depend directly or indirectly on China. When the supply chain from China got severed, it hit the API business badly as there were few other countries that could supply such volumes at such short notice. However, with most of these issues stabilizing and companies likely to increasingly outsource APIs, the potential appears to be quite huge. अब इन सब से ये सवाल आता है कि हाउ सिग्निफिकेंट इज एपीआई फॉर ल्यूपिन? एट अबाउट ₹1100 crore for the latest fiscal year, the API sales of Lupin account for about 8 to 10% of the total sales of Lupin. Definitely, that is a significant proportion and is large enough to drive growth in the coming years. Lupin के पास पहले से API प्रोडक्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है और इस पोर्टफोलियो को बढ़ाने के प्लान्स भी हैं। There are other advantages that Lupin sees in the separating the API business. One of the main aims of the Product Linked Incentive (PLI) scheme is to achieve self-reliance in the API space. That gives an incentive to the Indian API manufacturers like Lupin to expand their API franchisee to make the best of the incentives offered by the PLI scheme. Clearly, for Lupin, API is going to be the big growth focus, having growth sales at just 2% CAGR in the last 8 years. It surely needs a breakout and API can provide that. What will be the API story at Lupin? In the case of Glenmark, the parent wanted to eventually monetize the API business to reduce the debt of the group. Lupin has no such compulsions. Its debt about a third of its equity and its interest coverage is more than 3 times. ल्यूपिन के लिए एपीआई का फोकस पूरी तरह से ग्रोथ बढ़ाना और पीएलआई स्कीम के बेनिफिट्स लेना होगा। वी नाउ अवेट द एक्शन पॉइंट्स फ्रॉम ल्यूपिन। वेल, आज के इस लाइव वीडियो सेशन को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें एंड स्टे अपडेटेड विद आवर यूट्यूब चैनल blinkX for more such informations.